So, good morning, ladies and gentlemen, and good morning to all the dignitaries for this meeting. With the permission of Shri Ashok Minda ji, Chairman and Group CEO, it is the time now to start the meeting. Myself, Pradeep Man, Company Secretary and Compliance Officer of the company. I have joined this meeting from Group Corporate Office of the company at Sector 59, Noida. On behalf of Minda Corporation Limited, it is my proud privilege and pleasure to welcome you all at this 37th Annual General Meeting of Minda Corporation Limited. I hope you and your family members are keeping safe and in good health. Dear members, your presence here shows your interest, involvement, and confidence in the company. In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norms are to be followed, and therefore we are conducting this AGM through virtual platform as per the circulars issued by the SEBI and Ministry of Corporate Affairs. The Register of Directors and Key Managerial Personnel, the Register of Contracts and Arrangements, and other relevant documents have been made available for inspection during the meeting. Dear members, now I would like to introduce the dignitaries participating in the meeting for the benefit of new members of the company. Shri Ashok Minda ji, Chairman and Group CEO, participating this meeting from Group Corporate Office at Noida. Shri Akash Minda ji, Executive Director, participating this meeting from New Delhi. Shri Avinash Prakash Gandhi ji, Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, participating from New Delhi. Shri Rakesh Chopra ji, Director, he is participating from Dehradun. Shri Ashok Kumar Jha ji, Director and Chairman of Stakeholders Relationship Committee, participating from New Delhi, sir. Mrs. Pratima Ram ji, Director and Chairperson of CSR Committee and Audit Committee also. She is participating from Bengaluru. Shri Naresh Kumar Modi ji, our Executive Director, participating from Bawal Plant. Shri Ravi Sood ji, Director and Chairman of Risk Management Committee, participating from Gurugram. Mr. Pramod Parasramka, who is the member of Executive Committee of Senior Management. Sir, all the directors are present in the meeting, and other dignitaries who are present in the meeting are Shri Vinod Raheja ji, our Group CFO, have joined this meeting from Group Corporate Office at Noida. Shri Vikash Mehra, partner of SR Bartley Boy and Company, LLP, our statutory auditors, and his team members who have joined from New Delhi. And Shri Ranjit Pandey, practicing company secretary, our secretarial auditor, and also the scrutinizer for this meeting, has also joined us for this meeting from New Delhi. Dear members, requisite quorum is present, and therefore, with the permission of the chairman, sir, we may call this meeting in order. Dear members, notice dated 17th May 2022 convening this 37th Annual General Meeting and the copy of annual report for year ended on March 31st, 2022 have already been circulated to the members through electronic mode to members whose email address are registered with the company or registrar or their depository participant. With the permission of the chairman, sir, and with your permission, I take them as read. The auditor's report on standalone and consolidated financial statements for the financial year ended on March 31st, 2022 do not contain any qualification, reservation, adverse remarks, or disclaimer. Accordingly, the auditor's report is not required to be read out as provided under the Companies Act 2013. Dear members, we wish to inform you that for smooth conduct of this meeting, the connection of all the members will be on mute mode during the meeting. The members who have pre-registered themselves will be allowed by moderator to speak at the appropriate time during the meeting. Our chairman and group CEO, along with our group CFO, will answer to the question to be raised during the meeting by the speaker shareholders, along with the questions to be received in the chat box, depending upon the availability of the time. Dear members, in compliance with Section 108 of the Companies Act 2013, read with relevant rules, and as per the Regulation 44
of SEBI LODR Regulation 2015, remote e-voting facility was made available to the members from 25th July 2022 to 27th July 2022 to cast their votes on resolutions provided in the AGM notice. Dear members, the members who are participating in the AGM through this virtual platform may also cast their vote through e-voting system provided by NSDL during the AGM. Members can opt for only one mode of voting, that is remote e-voting at the AGM through NSDL platform. In case of voting by both the modes, voting done through remote e-voting will be considered final, and e-voting at AGM through NSDL platform will not be considered. E-voting window is open now and shall continue to be active for 15 minutes after conclusion of this AGM. Members are requested to exercise their votes by using e-voting facility provided by NSDL. Now I request our chairman, Shri Ashok Minda ji, to kindly address the members. So over to you, Ashok ji. Thank you, Pradeep. Namaste, dear ladies and gentlemen. On behalf of the Board of the Director, I welcome you all to the 37th Annual General Meeting of your company. It is pleasure and privilege to host you today. I was hoping to meet all of you in person, but we connect again over a virtual platform as a safety measure. I extend my best wishes for the good health and safety of you and your loved ones. The notice for the AGM and annual report for the fiscal year 2021-22 has already been circulated with you. With your permission, I shall take as read. As we reflect over the last year, it is clear that the auto industry faced many challenges during financial year 2022. The year began on a subdued note with the country witnessing second wave of COVID-19 pandemic. Post that, there was sequential improvement in the industry throughout the year, but we faced serious headwinds due to supply chain constraint, semiconductor chip shortages, emerging global geopolitical tension and its fallout, and rising inflationary pressure towards the end of the year. Overall, the auto industry volume were stable compared to the previous fiscal year, with the marginal growth of 1.2% year on year. Despite these challenging times, I am delighted to report that your company closed the fiscal year on a very satisfactory performance with revenue from operation of rupees 29,759 million, a healthy growth of 25.7% year on year. Operating EBITDA for financial year 22 stood at rupees 2,946 million, growing by 36% year on year. EBITDA margin increased by 73 basis points to 9.9% in financial year 2022. Profit after tax increased by 105% year on year and stood at rupees 1,919 million in financial year 2022. PAT margin increased by 250 basis points to 6.4% in financial year 2022. Your company also generated strong net cash flow from operation of rupees 1,669 million and continue to maintain a strong balance sheet with optimum capital allocation strategy. Dear shareholders, in light of company's all-round healthy performance, Board of Directors
have recommended total dividend of 50% on face value of, which is rupees 1 per share, on face value of rupees 2 per share for financial year 2022. Now, I would also like to update you on the key important development of the year. Your company entered into a joint venture with Infect Electronics, a South Korean-based company, for the manufacturing of vehicle antenna system, a segment which has strong growth outlook as demand for autonomous vehicle and connected mobility increases. Your company has also completed 100% acquisition of Minda Stoneridge Inc. joint venture, and the entity is now operating as wholly owned subsidiary under the name of Minda Instrument Limited. The consolidation will strengthen overall financial performance of the group, and at the same time, technical collaboration with Stoneridge will continue. Through our subsidiary, Spark Minda Green Mobility System, we have acquired 26% stake in EVQ Point, a company based out of Bengaluru. EVQ Point is a forerunner in electric vehicle charging solution and offer future-ready products in this segment. This will position your company to capitalize on the accelerating shift to electric mobility. The investment is aligned with our e-mobility vision of enhancing EV portfolio. I am also pleased to share with you that our PLI application has been approved under Component Champion Incentive Scheme. It is another testament of our innovation-based approach, which has also been recognized by our customer as well as industry. We continue to invest in development of advanced technological products such as smart key, digital cluster, center console, antenna solution, DC-DC converter, battery charger, etc. In the financial year 2022. Your company filed 28 patents, taking the total patent in the company to more than 250 numbers. Your company is well positioned to deliver strong and sustainable growth with the principle of disrupt, innovative, and lead. We have outlined a three-pronged approach. One, heavily investing in R&D to develop technological advanced solution. Two, establish technological partnership to further strengthen core business and maintain dominance in legacy product businesses. Three, introduce latest technologies and product to the Indian customers. In our journey ahead, one of the most important aspects of our business will be our employees, and we are proud of their dedication, commitment, and unstinting efforts to scale the company to new heights. I want to thank all my employees and colleagues for their continued support. In pursuing the growth ambition, your company is also committed to the welfare of the communities in which it operates. The company places high priority on its environmental, social, and governance performance and has taken several initiatives in this regard during the financial years. The robust ESG framework is implemented, providing customer satisfaction, product safety and quality, sustainable and local sourcing, innovative products, numerous initiatives on preserving environment, material and energy saving, skill development programs, education and livelihood promotions, empowerment of persons with disability, healthcare supports, development of community infrastructure, and some are the key cornerstones of your company culture. Looking ahead,
I am optimistic about the future and confident in your company's ability to deliver innovative and best-in-class product and solution to our customers, drive accelerated and profitable growth, and create value for all shareholders. I wanted to acknowledge and thanks Board of Directors, shareholders, business partners, customers, and employees for their continued support and faith in Minda Corporation. Thank you. Thank you very much. Namaste. And with this, now I would request Mr. Vinod Raheja, Group CFO, to present business updates and company performance during the year for the benefit of the existing as well as prospective stakeholders. Thank you. Thank you very much, Chairman Sir. I will quickly run through the business updates and business performance for financial year 21-22. I hope my presentation would be visible by now. Yes, sir. Please take it to the presentation mode, sir. Yes. Yeah. So, first, I will cover about Minda Corporation at a glance for the benefit of new members. We have achieved a turnover of 35,538 million in the financial year 21-22, which of course includes the revenue from JVs of 5.77 billion rupees. We are a committed and passionate workforce of 16,000 plus people. We have 33 plants, offices spread across various geographies. In all, we have 7 partnerships with Stonebridge, Vast, Silka, EVQ Point, which Chairman Sir pointed earlier, Furukawa Electric, Right Vision, and in fact, Korea, actually, We remain committed to creation of value for all our stakeholders. In terms of organization of our business, first I will talk about the domestic operations, which comprises of security and safety division, die casting division, starter motor and alternate division, wiring harness, instrument clusters and sensors, interior plastics, aftermarket division, electric mobility and electronics, and of course, Spark Minda Electric Vehicle Company, Spark Minda Green Mobility. Then our overseas operations in Asian countries, in Indonesia and Vietnam, which are 100% wholly owned, and we have joint ventures. Minda Vast, where we hold 50% stake, Furukawa 25%, and Minda, in fact, 51%. All these businesses are organized under various verticals like mechatronics, information and connected system, interiors and plastics, aftermarket, and electric vehicles and electronics. These are the key products which we are manufacturing under different verticals: keyless entry, instrument clusters and sensors, wiring harness, plastic division, aftermarket, and electric vehicles and electronics like DC charger, antenna products, ITS, lithium iron battery, etc. So we have diversified portfolio for our Indian and international market. These are our key customers, and we continue to be a preferred partner, which is evident from the fact that in the year gone by, we posted a very strong and robust growth. Across various vehicle segments, our customer list includes who, and these in their own rights. Further, in the year gone by, we extended the list of our EV customers by winning contracts, say, from Hero Electric, Revolt, Ather, Ampere, and many others. ESG, of course, is the core of our business, and the 5 principles that we work on are ethical business, sustainable operations, responsible value chain, care for people, and of course, inclusive growth, actually, Now I will cover the significant events in the year gone by in all the quarters, basically, be it Q1, Q2, Q3, Q4, despite there being abnormalities in the year gone by and super abnormality in the financial year 21-22. Our performance far
outperformed the industry performance actually across all the quarters actually, On strategic side, as Chairman Sir mentioned, that we increased our stake in Minda Stonebridge and eventually it became a wholly owned subsidiary in Q4 of the financial year gone by actually, And then in Q4, our application for production linked incentive of Government of India under Component Champion Incentive Scheme was approved, and some benefit of this scheme should start accruing to us in this year. And filed 28 patents in the year gone by and won total lifetime orders of 59 billion rupees. And we continue to outperform the industry growth in all the consecutive quarters, as I mentioned earlier. In terms of the important achievements for financial year 22, of course, new product development continues to be a focus area with keyless entry solution, new vertical like electric mobility, and intelligent transport system for city bus transport system were the new products which were developed in the year gone by. And of course, the new collaborations which Chairman Sir touched upon in terms of Right Vision, Impact, EVQ Point, and of course, Stonebridge. Now, I will talk about the industry and company performance in the year gone by. As Chairman Sir earlier mentioned that the year gone by saw a overall growth of 1.2% in terms of volume in auto industry, and there was some recovery over the previous year, where of course that was largely or to a very large extent impacted by the COVID pandemic actually, But still, the industry volumes in the year gone by were lower than pre-pandemic period. Passenger vehicle, commercial vehicles, and three-wheelers registered an uptick performance of say 19.2%, three-wheelers at 23.3%, and commercial vehicles robust performance or robust growth of 28.9%. However, tractors and two-wheelers were sluggish actually, Overall net industry posted a growth of 1.2%. Of course, the Indian automotive story continues to be promising with low promising level, with low penetration and rising incomes. But of course, there are certain external factors which may sort of have some impact on automotive demand in the short term. In terms of the consolidated performance of Minda Corporation, in the year gone by, we had operating revenue of 28.38 billion rupees without MIL consolidation, which started from Q4. With MIL, that is Minda Instrument, we posted revenue of 29.76 billion rupees, a growth of 26%. Similarly, our EBITDA margin stood at 9.9% vis-a-vis 9.2% in the previous year, thus a trend of 70 basis points. Similarly, PBT as well as PAT margins also expanded over the last year. And the board of directors have announced total dividend of 50% for the year, of which 15% has already been paid as interim dividend. In terms of our consolidated leverage position or debt equity, considering a total net worth of about 13.3 billion rupees and a meager debt of about 553 million rupees, which translates to a debt equity ratio of 0.04%. So largely, we are sort of a net debt free company. Our return on capital employed for the year stood at about 12%. Of course, we must bear in mind that Q1 was badly impacted because of COVID. And if we exclude Q1, our return on capital employed was around 15%. We continue to enjoy superior credit rating of AA so far as our term loan program is concerned, and top-notch rating for commercial paper and short-term borrowing program. In terms of our technological push or technological or engineering capabilities, which is evident from the fact that we have filed more than 215 patents in last 5 years actually, which constitutes about 50% of the total patent portfolio which the company has. We continue to focus on R&D and spend around 2% of our top line on R&D effort. And 450 plus engineering headcount, which of course makes us future ready for future technologies. In terms of the key trends which are impacting Indian automotive industry, those are
connectivity, autonomous vehicles, which Chairman Sir also mentioned in terms of our joint venture with the INFAC of Korea, shared mobility, and of course, electric mobility. Our products and the new developments which are taking place are in sync with these key trends, which we can see that in terms of connectivity and shared mobility, safety, lightweighting, and therefore which puts us in a sweet spot actually. And if we really look at the electric vehicle, vis-a-vis the current IC vehicle, where the content of our product portfolio two-wheeler is about 4,000 rupees actually, and with the premiumization taking place, it has a potential to go to about 8 to 10,000 rupees kit value per vehicle. But with electric mobility or electric vehicle, it can go to about 16,000 to 20,000 rupees, and therefore it has a clear-cut potential of about 4x in kit value actually. Focus areas for us, of course, the customer trust, which makes the payday possible for all the stakeholders, and we continue to focus on enhanced requests for quotations, improved customer quality levels, service and quality levels, enhanced project management and delivery, etc. And of course, we have continued our focus on digitization of processes across all our verticals. And again, employees are the main pillars, and we continue our focus on enhanced employee engagement. If we really see our legacy business, we are working on innovative solutions and bringing new technologies. All our products in our key verticals, key four verticals like security and safety and security systems, wiring harness, die casting division, and instrument clusters. We are consistently investing in new technologies, and which will help us to disrupt, innovate, and lead. And this is our USP and value proposition, and which puts us in a sweet spot for a bright future, actually. And that is it from my side. Pradeep, back to you. Thank you, sir, for your elaborate presentations. Dear members, the notice of 37th Annual General Meeting dated May 17, 2022 was sent to the members through electronic mode containing 7 agenda items which requires the approval of members of the company. Ordinary resolutions are as under. 1. Adoption of financial statements, directors and auditors report for the financial year ended on 31st March 2022. Confirmation of payment of interim dividend and declaration of final dividend on the equity shares of the company. Appointment of Mr. Akash Minda, holding DIN 068707774 as director, who is liable to retire by rotation and being eligible offer himself for reappointment. Mr. Akash Minda is already holding the position of Executive Director of the company, and he will continue to act as Executive Director. Appointment of Mr. Naresh Kumar Modi, holding DIN 000089536 as Director, who is liable to retire by rotation and being eligible offer himself for reappointment. Mr. Naresh Kumar Modi is already holding the position of Executive Director of the company, and he will continue to act as Executive Director of the company. The next is to fix the remuneration of statutory auditors of SR Bartley Bai and Company LLP, Chartered Accountants, firm registration number 301003/E/E300005. Item number 6, ratification of remuneration of Chandra Wadhwa and Company, Cost Accountant, as Cost Auditor of the company for the year 2021-22. And the only special resolution is regarding appointment of Mr. Ashok Minda, holding DIN 0054727 as Chairman and Group CEO of the company, and approval of his remuneration. Dear members, the board has appointed Mr. Ranjit Pandey, practicing Company Secretary, as the scrutinizer to supervise the e-voting process and declaration of results. The result of the e-voting will be declared and will be submitted to the stock exchanges
and placed on the website of the company within the prescribed timeline. Now, with the permission of the chairman, sir, I will allow pre-registered speaker shareholders one by one to speak and give their inputs. Members are requested to take note that the company reserves the right to limit the number of members asking questions depending upon the availability of the time. Members are further requested to wrap their queries in 1 or 2 minutes to save the time. Sir, our first registered speaker shareholder is Mr. Pradeep Sood, holding DPID IN 3011 27156 33348. Hello. Pradeep ji, over to you. Thank you very much. Can you listen me, sir? Yes, Yes. we can hear you. Yes. Yeah. चेयरमैन सर, मैं प्रदीप सूद दिल्ली से अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आपका और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। चेयरमैन सर, बीते सालों से आप जिस मेहनत लगन ईमानदारी से कंपनी के लिए डिवोशन और डेडिकेशन से काम करते चले आ रहे हैं और इस कंपनी के शेयर्स को नई ऊंचाइयां दी हैं, अच्छा डिविडेंड दिया है और अच्छा रिटर्न दिया है। और हम ये उम्मीद करते हैं और आशा जताते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह से आप काम करते हुए इस कंपनी के शेयर्स को नई ऊंचाइयां देंगे। जो ऊंचाइयां आज है उससे कहीं बेहतरीन ऊंचाइयां देंगे, बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देंगे। हम तो 100% डिविडेंड की उम्मीद लगा के बैठे हैं और आप ऐसा करके दिखा देंगे, हमें पूरा भरोसा है। बाकी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा हमारा नेक्स्ट टाइम जब हम इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, एक अच्छे डिविडेंड के साथ, बेहतरीन रिजल्ट के साथ और शेयर्स की नई ऊंचाइयों के साथ। बाकी मैं और अजय खुराना ये हम अपने कंपनी सेक्रेटरी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये डे टू डे अफेयर्स में अपने शेयर होल्डर्स के बीच अमंग अवर शेयर होल्डर्स बिल्कुल डे टू डे अफेयर में बिल्कुल रूबरू रहते हैं। कभी भी किसी तरह की कोई भी ग्रीवेंसेस होती है हम इनको मेल करते हैं और उसका हमें तुरंत जवाब आ जाता है। मैं अपने कंपनी सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद करता हूं उनकी पूरी टीम के साथ कि इस तरह से कंपनी सेक्रेटरी जो हमारे हैं वो मैनेजमेंट के साथ एक बीच का प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स की ग्रीवेंसेस बड़ी इजीली और आराम से सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो एमडी और पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक हमारी बात अपने आप ही पहुंच जाती है। थैंक यू मान साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चेयरमैन सर। मैं फिर से अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आप सबको मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जब हम नेक्स्ट ईयर इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छे रिटर्न के साथ, अच्छे डिविडेंड के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Pradeep ji and Ajay ji. We will do our best with your support and all that. We will do our best and will continue to do the performance better and better. Thank you, ji. Thank you, sir. Sir, our next registered speaker shareholder is Mr. Pramod Kumar Jain, holding DPID IN 302 9941 0082 531. Pramod ji, can you hear me? Jain sir, can you hear me, please? Sir, I think there is some issue. We can move to next shareholder. Okay. Sir, our next registered speaker shareholder is Mr. Gagan Kumar. Mr. Gagan, over to you, please. Hello, Gagan. Am I please. audible? Yes, please. Yeah, good morning, Mr. Chairman, Board of Directors and fellow shareholders. Myself, Gagan Kumar, I am joining this meeting from Delhi. चेयरमैन साहब, काफी लंबे अरसे से हम अपनी कंपनी से जुड़े हुए हैं और ये बात कहते हुए मुझे आज बहुत फख्र हो रहा है कि हमारी कंपनी का जो लोगो है पावर्ड बाय पैशन और हमारी मैनेजमेंट में पैशन की कोई कमी नहीं है सर। और हमारा जो शेयर है 2 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर आज 225 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
और अगर हम अपनी कंपनी के जो आपने मीटिंग से पहले एक प्रेजेंटेशन दिखाई और उसके बाद श्री विनोद रहेजा जी ने उस अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोग्रेस के बारे में जो हमारी कंपनी के बारे में हमें बताया है सर, मेरे ख्याल से उसके बाद कोई सवाल जवाब करने की गुंजाइश तो बची नहीं है। काफी कुछ क्लियर हो चुका है उसके अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि जैसे आजकल गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है, उसके विषय में आप अपने विचार जरूर साझा करें कि क्या आप इस बारे में सोचते हैं और हमारी कंपनी जो है इसमें किस तरह से आगे अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। और जो रुपए की कीमत भी जो है सर वो भी कंटिन्यूस डाउनफॉल पे है और डॉलर ऊपर जा रहा है, और उस तरह की जो क्या हम अपनी कंपनी में हम उस चीज को फेस कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बाकी अपने सीएस साहब और उनकी एंटायर टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक एक्सीलेंट हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो मेंटेन किया है। एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अपने जो कंपनी से रिलेटेड आपके जो कामकाज हैं, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, वो तो बीएससी एनएससी की साइट पे टाइमली अपडेट हो ही जाते हैं। रादर देन दैट, अगर और भी कोई इशू है, किसी को अपने शेयर्स के रिगार्डिंग बात करनी है, कुछ फिजिकल इशू है, कुछ आईपीएफ इश्यूज है, तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल समय पर अपना रिप्लाई मिलता है सर। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गगन जी। आपके जो दो क्वेश्चन थे, पहली चीज जो प्लास्टिक का आपने बताया, जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्शन है, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो है ही। पहले एज ए कॉर्पोरेट सिटीजन ये हमारी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें। तो पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत पहले से अपना शुरुआत किया कि किस तरीके से हम प्लास्टिक, किस तरीके से हम अपनी पैकेजिंग जो है का इस्तेमाल बंद कर दिया हमने। हम उसकी जगह रीयूजेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं और हर एक जगह इसका ख्याल रखते हैं कि एनवायरनमेंट को अशुद्ध ना किया जाए। उसके अलावा भी पेपर सेविंग का टारगेट है, पावर सेविंग का टारगेट है। आए साल हम ऐसे टारगेट बनाते हैं हर एक एरिया में और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एंड द मोस्ट important area as a corporate citizen to provide to the community, to give it to the community. Regarding जो forex exchange का आपने बोला, in most of the cases, rather mostly, we have to have the back-to-back arrangement with our customer. So जो भी हमारे को impact आता है, चाहे वो commodity का है, चाहे वो इसका है, in most of the cases we have to back-to-back arrangement. So your company is protected because of this fluctuation. This is what I would like to answer your reply. Thank you, sir. Sir, our next shareholder is Mr. Rakesh Kumar. DP ID 120141000001025. Hello, I am audible, sir. Rakesh ji, over to you. Yes, please, we can hear you. Chairman sir, board of directors and co-shareholder. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। सर मेरे पास कुछ और कहने का मौका नहीं दिया, आपने अपनी सारी स्पीच में हमें सब कुछ समझा दिया। बाकी शेयर प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो, हम बहुत आपको बधाई देते हैं कि सर आपकी मेहनत रंग ला रही है और शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है। बाकी सब क्वेश्चन मेरे शेयर भाई पूछ चुके हैं और आपने भी क्लियर कर दिया अपनी स्पीच में। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर कि आपने बहुत अच्छा किया, कंपनी को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और इसके साथ ही शेयर प्राइस और भी बढ़ेगा और हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Rakesh ji. Definitely, we will do our best to perform consistently and continuously. We'll do our best. Thank you, ji. Thank you, sir.
Sir, our next speaker shareholder is Mr. Ajay Kumar Jain, holding DPID 1203230000004838. Yeah, Ajay ji, over to you. हाँ नमस्कार चेयरमैन साहब, आज मैं काफी हर्ष और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आपके समूह के इस माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। सर, ये आपकी जो चेयरमैन स्पीच थी वो दो बातों पे टिकी हुई थी, वो मैं आपके बारे में पर्सनैलिटी पे कहना चाहूँगा। एक तो पारसमणि और एक कल्पवृक्ष। पारसमणि का मतलब ये है कि सर आपका विजन और जो वर्किंग पावर है ना, जिस चीज में भी आप सोचते हैं और करते हैं वो हमेशा ऊंचाई की तरफ जाती है, जिसका लाभ कंपनी के अलावा शेयर होल्डर सबको मिलता है। और कल पिक्स मैंने आपको इसलिए किया कि आप हर बात को समय आपके पास आके कहने से पहले ही आप उस काम को पूरा कर देते हैं, चाहे वो आपके कंज्यूमर्स हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे एम्प्लॉइज हो। ये एक आपकी क्वालिटी है सर। आप मेरे लिए तो दिल्ली बावन के लिए मैं रहता हूँ, वहाँ के लिए तो मेरी पर्सनैलिटी है ही और पूरे भारत के हैं, क्योंकि आपको देखना और आपको सुनना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मोती से बरस रहे हो सर। एक मेरे से पहले शेयर होल्डर ने कहा था कि पेशेंस लिखा हुआ है। मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा, पेशेंस के साथ साथ जो चेयरमैन साहब की स्माइल है कॉन्फिडेंस की, वो और जोड़ दिया जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगी। और सर शेयर तो हमारा अंडर वैल्यूड है और आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट जब लोगों को पता चलेगा और हमारे शेयर का प्राइस शेयर ले नहीं पाएंगे, और जब हजार से ऊपर हो जाएगा, जब उनको पता चलेगा कि हमारे चेयरमैन साहब के अंदर पेशेंस और स्माइल की परिभाषा क्या होती है। सर आपकी तारीफ करते करते पूरा दिन और पूरा साल निकल जाएगा। मैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में दो बात जरूर कहूंगा सर। उन्होंने इस मीटिंग को ना सर औपचारिकता न समझ के जिम्मेदारी से निभाया है। उसका उदाहरण मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। मेरे को रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में कोई मेरे को समझ में नहीं आया था और मेरे से कोई मिस्टेक हो गई थी। उनकी टीम ने युद्ध स्तर पे उसको सोल्यूशन निकाला और मैं इस माध्यम से जुड़ पाया। और मैंने पूछा सर इतनी पेशेंस क्यों, इतनी आप पेन क्यों ले रहे हैं? कहते नहीं नहीं, चेयरमैन साहब की सख्त इंस्ट्रक्शन है कि हर एक को जोड़े। सर एक टीम का नेटवर्क वो आज दिखाई दिया। सुखद भविष्य, सुखद कामना, शेयर होल्डर का लाभ, यही आपका मोटो है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अजय जी, थैंक यू फॉर योर सेइंग। आई ऑलवेज बिलीव, जैसे आपने बताया पारसमणि और कल्पिक्स, कि आई ऑलवेज बिलीव एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। फर्स्ट इज in the mind and then in reality. So we always believe how to do proactive approach, and whether it is our customer, whether it is our employee, or whether it is our shareholder or any of the stakeholder, we must do our proactive with our proactive approach and do the solution. Thank you ji, thank you very much for your saying and your showing your confidence on us. Thank you, sir. Sir, our next shareholder is Mr. Chetan Chadda, holding DPID 12014100000010073. Thank you, sir. Thank you. Can you hear me? Yeah, Chetan ji, we can hear you, please. But sir, कैमरा ऑन नहीं हो रहा। मैं चाहता कि कैमरा भी हमारा ऑन हो जाए और आप Okay, give me. Now you can open the camera also. Thank you, sir. Thank you to given me the opportunity to join with you. I am really thankful to the management who given me the chance to speak to with you. Sir, सभी लोगों ने आपकी भर के तारीफ कर दी है और मेरी नज़र में कि आप पूर्णतर खरे उतरे हैं सभी शेयर होल्डर के ऊपर, जो सभी शेयर होल्डर आपसे खुश हैं। हम आपकी एजीएम फिजिकल मैनर में होती थी तब भी अटेंड करने आते थे और इस वीसी के माध्यम पे भी आपने हमें जोड़ा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर शेयर का प्राइस तो है जो लास्ट 2 डिकेड के अंदर हम देखें 2 सालों में कोरोना के बाद अब काफी ऊंचाइयों पर चलने की तैयारी पर है। सर 2008 के बाद हमारे शेयर ने वापस ये तेजी पकड़ी है और मैं आशा करता हूं कि ये तेजी बरकरार रहे। जो इंडिया सिनेरियो है वो काफी बढ़िया है, लेकिन सर मेरा मैनेजमेंट से एक जो छोटा सा सवाल है कि जो 2 सालों में अगर हम इन्फ्लेशन को देखें और ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो आप देखेंगे कि उसका भार पड़ता जा रहा है, जो कंपोनेंट्स हैं उसमें काफी तेजी है, मटेरियल में काफी तेजी है, उसके लिए मैनेजमेंट आगे क्या प्रोस्पेक्टस बना रही है? और आने वाले 2 साल के अंदर जो ऑटो इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि ईवी में तेजी आ रही है,
गवर्नमेंट ने सीएनजी के और पेट्रोल के और उसके रेट बराबर तकरीबन कर दिए हैं। तो ईवी के माध्यम पे अब जो डाइवर्सिफिकेशन है ईवी पे जाने वाली है। तो हम क्या टू व्हीलर के अंदर भी ईवी के साथ कुछ कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में जाने की तैयारी में है, क्योंकि नई नई कई कंपनियां आ गई हैं और वो ईवी के माध्यम पे चलने की तैयारी में है। तो हम अपने आप को कितना डाइवर्सिफाई करके उस रोल मॉडल की तरफ चलेंगे जो पोल्यूशन को बचाएगी। और जहां तक मैं देखता हूं कि आप लोगों ने सीएसआर एक्टिविटी में भी काफी बढ़िया काम किया है, लेकिन मैं मैनेजमेंट से ये भी कहता हूं कि जो हम सीएसआर पे खर्च करते हैं हमें उसमें भी एक रोल मॉडल के तौर पे बनना चाहिए। और उन लोगों पर जिन पे हम इस पैसा स्पेंड करते हैं एजुकेशन के ऊपर, उन लोगों को ये एजुकेशन देनी चाहिए कि वो हमारी कंट्री के लिए भी आगे एक रोल मॉडल बने। ये नहीं कि वो हम लोगों ने उनको एक सपोर्टिव मॉडल के तौर पे खड़ा किया देश के लिए और वो उसके बाद जो तैयारी है करके आगे अनदर कंट्री में जाके उसका बेनिफिट दें। उसका बेनिफिट भी वो हमारी कंट्रीज में दें, या किस तरीके से आगे अनएजुकेटेड लोगों को एजुकेटेड करने में अपने स्किल्स जो है डेवलप करके बांटें, इसके ऊपर भी थोड़ा हम जोर दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टू गिवन मी दी अपॉर्चुनिटी। और जो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में ममता जी ने भी मुझे आपके साथ जुड़ने के लिए रिकॉल भी दी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का जिन्होंने मुझे लिंक दिया टाइमली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन जी। जो आपने कॉस्ट का जो ऑटोमोबाइल के ऊपर भार बताया ज्यादा पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। चाहे वो कमोडिटी प्राइस से है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज से है, तो हमारा बड़ा फोकस रहता है किस तरीके से वैल्यू इंजीनियरिंग करके किस तरीके से लगातार हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करें और अपने एंड कस्टमर को, जो हमारा ओईएम के थ्रू एंड कस्टमर है, उसको कम से कम पेन ऑफ द प्राइस इंक्रीज दिया जाए। ये हम कंटिन्यूस हमारी एफर्ट्स रहते हैं। रिगार्डिंग द ईवी, यस, जैसे मैंने अपनी स्पीच में बताया कि हमने स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी कंपनी चालू करी है जो कि 100% सब्सिडी है। ईबीक्यू के साथ जॉइंट वेंचर किया। वेरियस प्रोडक्ट, चाहे वो डीसी कन्वर्टर, चाहे बैटरी चार्जर, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड और कंटिन्यूस करते जा रहे हैं। और जो हमारे स्पार्क मिंडा टेक्निकल सेंटर में और एसएमजीएम में लॉट ऑफ इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं कि किस तरीके से और प्रोडक्ट को डेवलप करें। सीएसआर का जो है, ये सीएसआर का काम और ये अपना जो कर्म है, ये ऐसा कर्म है जो कि हमको बार बार लगातार करते रहना पड़ेगा और हमें अपना कर्म निभाता रहना पड़ेगा और लोगों को भी एजुकेशन देनी पड़ेगी कि किस तरीके से सब वो उसको एक्सपेंड करें। सो दिस इज आवर ड्यूटी एंड वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग दिस एक्सरसाइज एंड दिस एक्टिविटीज। धन्यवाद जी। सर एक छोटी सी बात का बस आपसे रिव्यू चाहता हूँ कि आपने काफी टाइम से हमें बोनस नहीं दिया, अब मैं आपसे बोनस मांगूंगा भी नहीं, आपने स्प्लिटिंग दे दी है, लेकिन जो आपने ग्रीन कंपनी की नई नींव रखी है ना, बस उसके एक शेयर पे शेयर जरूर फ्री दे देना, ताकि हमारी उतनी कंपनी की नई कंपनी में हमारी आपके साथ सदस्यता बन जाए और हमारी आपके साथ साल में एक की जगह 2 बार मुलाकात हो जाया करे। तो कम से कम ये आप जो है ना एक मतलब अपने पास मत रखना खाली, इसके लिए आप एक काम करना कि हम लोगों को भी उसमें हिस्सेदार बना लेना, ताकि हमें भी लगे कि आपने जो जो चीज बढ़ाई है उसमें हमें अपने साथ हिस्सेदार रख लिया है। ये तो हमारा शुरू से और हमेशा रहता है कि बिना आपके साथ के हमारा कोई औचित्य नहीं है, तो आप लोगों का साथ हमको तो हमेशा चाहिए और हमेशा रखते रहे। कंपनी ग्रो करे, आप लोगों की लंबी उम्र हो, ताकि हम हमारे भी जो बच्चे हैं, मैं सेकंड जनरेशन हूँ, फर्स्ट जनरेशन मेरे फादर ने आपके शेयर लिए थे, मदर ने, और आज वो हमारे शेयर स्प्लिट हो गए, काफी हो गए हैं, और हम आज चाहते हैं हमारी जनरेशन तक नई कंपनी के शेयर भी उतने उतने बन जाए, तो उन्हें भी हम बता सके कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आज रंग खिल रही है और आने वाले उनके बच्चे भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। Sir, our next shareholder is Mr. Lokesh Gupta. हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे Lokesh हैं? जी, over to you. Yes. सर मैं लोकेश गुप्ता चेयरमैन सर आपका और सभी बोर्ड मेंबर्स का स्वागत करता हूं। सर फिजिकल मीटिंग में भी हम आते थे और 2 साल से बीसी मोड पर हैं, आज भी बीसी मोड पर हैं। सर एक्सीलेंट चेयरमैन स्पीच हो रही थी, उसके बाद एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो रहा था, उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है।
सर हम बहुत से वर्टिकल्स में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल, सिक्योरिटी में, डाइकास्टिक में, और बहुत से काम करते हैं। एक हम नई फील्ड में गए हैं जहाँ हेलमेट में, जहाँ हम ह्यूमन सेफ्टी भी चाहते हैं। सर यहाँ हम कितनी ग्रोथ आने वाली हमने सोची है 1 या 2 साल में सर। कोई अच्छा प्लेयर इसमें था नहीं सर, हमने अच्छा सोचा है सर। बाकी आपने अपनी चेयरमैन स्पीच में बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सर कितना भी हम काम कर रहे हैं, जब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काम नहीं हो पाएगा। सर इसके बारे में हमारी क्या तैयारी है और क्या विजन है हमारा, थोड़ा इस बारे में बताइए सर। ताकि एक अच्छा प्लेटफार्म हमें मिला है सर, हम इसमें आपसे जुड़ पाते हैं, भविष्य में इस प्लेटफार्म पे जुड़ते रहेंगे, इसकी आशा है। और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट सर, आपकी लीडरशिप में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने जिस तरह अच्छा काम किया है, और मिंडा के सारे स्टाफ ने जिस तरह काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का अवसर दिया। थैंक यू सर। लोकेश जी, नमस्कार। हेलमेट का जो आपने बताया, वी हैव डन, हमने पोटेंशियल वर्कआउट किया और ये भी देखा कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बड़े लॉजिस्टिकल रूल लेके आ रही हैं। लगभग 40,000 डेथ होती हैं हेलमेट की वजह से आए आए साल। एंड ये एक बहुत बड़ा समस्या का कारण है ह्यूमन सेफ्टी के लिए। तो और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर तवज्जो कर रही है, और हमने भी डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में इसका पोटेंशियल एक डिफरेंट स्केल पे होगा, और इसमें भी क्वालिटी जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, वी ऑलवेज गिव ए फर्स्ट प्रायोरिटी टू द क्वालिटी। सो ये शुरुआत है अभी हेलमेट की, बट मेरा सोचना है कि मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर, दिस विल हैव ए गुड प्रोग्रेस। चार्जिंग स्टेशन का जो आपने बताया, दैट्स यस, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। दैट इज व्हाई द पेनिट्रेशन ऑफ द ईवी व्हीकल जो होगी वो ग्रेजुअली होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार भी बहुत काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत काम कर रही है ये चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इसको और पेनिट्रेट किया जाए ईवी व्हीकल को। एंड मेरा सोचना है ईयर बाय ईयर, शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा, शुरुआत के 2-3 साल में, बट 2-3 साल के बाद ये एकदम शूट अप करेगा जिस दिन ये हमारा कॉस्ट ऑफ द ईवी व्हीकल और जो चार्जिंग स्टेशन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हो जाएंगे। तो देयर इज अ गुड फ्यूचर, बहुत अच्छा फ्यूचर है ईवी के लिए। और आपकी कंपनी जो है वो बहुत एफर्ट्स कर रही है नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, नया नया मार्केट कैप्चर करने के लिए, और इस एरिया में R&D में भी हम आपकी कंपनी अच्छा इन्वेस्ट कर रही है। Thank you, sir. Sir, our next shareholder is Mr. Manjeet Singh. Manjeet ji, over to you. हाँ जी, माय ऑडिबल सर? Yes. मिंडा कॉर्प के चेयरमैन और सभी टीम, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, सभी को नमस्कार। आपने कंपनी जिस तरह से चलाई है वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन और चेयरमैन स्पीच में काफ़ी कुछ आपने हमें बता ही दिया ऑलरेडी। हमारी कंपनी 1985 से चलती आ रही है और करीब 40 साल पूरे होने जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, तो उसकी आपको मुबारकबाद। और आने वाले फेस्टिवल सीजन में हमारी ऑर्डर बुक क्या है और थोड़ा 24 महीने के आगे हमारे क्या प्लान है, थोड़ा इस बारे में आप बताइएगा। कोरोना काल के बाद हमारे जो प्लांट हैं वो पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं। अगर डिमांड अगर पूरी नहीं हो रही तो आपने ग्रीन का तो एक नया रखा ही है, और एक्सपेंशन में कोई और नए प्लांट आप लगाएंगे। और आपने चार्जिंग स्टेशनों की तो बात की है, तो मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो प्लांट हैं उनमें जो रेगुलर बिजली का है, उसके अलावा जो दूसरी बिजली है, सौर ऊर्जा वगैरह या और कुछ, उसका कुछ हम उपयोग करते हैं और कितने % हम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कितना % हम बढ़ाएंगे, थोड़ा आप इस बारे में बताइएगा। बड़ी खुशी की बात है कि आपने हेलमेट के अंदर भी कदम उठाया और 145 वेरिएंट में आपके आ रहे हैं प्रोडक्ट आपके, और
मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो कस्टमर है, वो मार्केट जाने की जगह ऑनलाइन पर भी इन प्रोडक्ट को मँगाता है। तो ऑनलाइन हम जुड़े हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से, क्योंकि इसमें जो है सेल काफ़ी इंक्रीज़ होती है। घर बैठे ही आपने जो लैपटॉप या फ़ोन पर आदमी सारी वैरायटी देख लेता है और पसंद कर लेता है। आप अगर ऑनलाइन पर अपने प्रोडक्ट को रखेंगे, तो बहुत अच्छा रखेगा रहेगा। और कुछ ऐसा लगा है कि हमें 1500 फाइबर पार्ट्स जो हैं प्लास्टिक के, उसके स्कूटर इंडस्ट्री और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर हमने उसमें प्रवेश किया है। 1500 फाइबर पार्ट्स का आ रहा है कुछ, तो ये ठीक है क्या? आप इस बारे में बताइएगा। आने वाले टाइम में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं, हाई जीएसटी में चलते हैं, तो जीएसटी की मीटिंगों में हम कुछ जीएसटी कम करवाने के लिए कुछ कहते हैं, क्योंकि जो हमारे रॉ मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ते रहते हैं और कॉस्ट जो है कस्टमर के ऊपर काफ़ी पड़ती है। और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो हाई जीएसटी, जो सबसे हाई रेट है जीएसटी का, उसके अंदर चलती है। तो थोड़ा आप इस बारे में बताइएगा। बाकी वही शेयर होल्डर की चाहत, कॉर्पोरेट एक्शन, तो बोनस की तो आप अभी मतलब जैसे बात हुई कि आपने ग्रीन एनर्जी शुरू की है, तो हम नहीं उम्मीद करते। तो हम उम्मीद करें कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर कि कोई बायबैक का प्लान आपका आएगा, आप अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाएंगे। थोड़ा आप इस बारे में बताइएगा। समय समय पर हमें जो अवार्ड मिलते रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा स्कूटर, तमाम जो टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां, उनसे जो हमें अवार्ड मिलते रहे हैं, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और जो है सीएसआर एक्टिविटी के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में चेयरमैन सर ने बता ही दिया है सब कुछ, वो हमें अच्छा लगा है। और जो ये आपका मार्केटिंग में सामान जाता है स्कूटर पार्ट्स का, तो जैसे प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा है, तो आप अपने बॉक्स में एक दो या पांच, कोई 5 7 10 किलो का कोई थैला साथ में उसमें बॉक्स के अंदर डालकर भेजें, तो आपकी फ्री एडवर्टाइजमेंट होगी। जहाँ भी वो थैला जाएगा, चाहे वो सब्जी बाजार में जाएगा, चाहे किराना स्टोर पर जाएगा, तो मिंडा कॉर्प की फ्री एडवर्टाइजमेंट होएगी। वर्तों जाएगी बाबूजी ये चीज। अगर आप थैले का वो अपने बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा करें इंतजाम, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी बहुत अच्छा हमें लगा है, मीटिंग में हमने इंजॉय हुए हैं, हमारे सभी फैमिली मेम्बरों ने भी अटेंड की है, और हमारे जो है दोस्तों ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। और हम सभी आपके रेगुलेशनों को पास करते हैं, और जो हमारे दोस्त और फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने सब ने जो है आपकी कंपनी का मान बढ़ाया है। और थैंक यू, और आपने जो ये टाइम दिया हमें, थैंक यू। थैंक यू जी, आपके बहुत सारी, सबसे पहले तो जो आपको कंपनी के बारे में जो ज्ञान है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपको बड़ा अच्छी डिटेल में पता है, और ये अच्छी बात है। ये मैं जरा क्विकली, आपके कई सारी चीज थी, तो मैं क्विकली आपको बोलता हूँ। ऑर्डर बुक में हम लगातार अपने को मॉनिटर करते रहते हैं किस तरीके से हमारी ग्रोथ के हिसाब से ऑर्डर बुक हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये हमारा सबसे टॉप इशू रहता है कि सस्टेन और आगे कंटिन्यूस ग्रोथ करने के लिए। प्लांट की कैपेसिटी हमारी अच्छे लेवल पे चल रही है। कोई किसी भी प्लांट, किसी भी प्रोडक्ट की कैपेसिटी कोई लो कैपेसिटी नहीं है, बट अप्रोप्रिएट कैपेसिटी पे चल रही है। हाँ, आजकल सेमीकंडक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, मैंने जैसा अपनी स्पीच में भी बताया वो, बट somehow we are managing along with the customer. सोलर एनर्जी, लगभग हम अपने सारे जितनी भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लगभग 35% के आसपास हम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सब प्लांट के अंदर। आपको जैसे आपने बताया हेलमेट और फाइबर का, हमने सारे प्रोडक्ट रेंज इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसका जो रिजल्ट है वो टू बैक
को पब्लिसिटी दे, तो इसको हम जरा आपके सारे सब इनपुट का। थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट shareholder is Mr. Praveen Kumar. Praveen ji, over to you. Hello, I am audible, sir. Yes, please. Sir, a very good morning to respected chairman, sir, my esteemed board director and fellow shareholder who joined this meeting online, sir. Myself, Praveen Kumar, joining this meeting from New Delhi, sir. Sir, first of all, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आई एम विद द कंपनी सर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। जो हमारी फिजिकल मीटिंग होती थी मैं उनको भी अटेंड करता था और एक काफ़ी अच्छी हेल्दी इंटरेक्शन, एक बहुत अच्छी गुड मेमोरीज है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चेयरमैन साहब, आपने अपनी स्पीच में ये कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उसके बाद सोने पे सुहागा हमारी उसने बहुत अच्छा काम किया। जो हम जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो उस चीज़ को बहुत इजीली समझ पाए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जितनी भी रेजोल्यूशन आपने सेट की है मैं सभी का समर्थन करता हूँ और सभी का समर्थन करता हूं। और जो हमारा ईवी में वेंचर हुआ है, एक हेलमेट सेगमेंट में वेंचर हुआ है, वहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है जैसे आपने बताया। आई डू एग्री विद यू। मेरी शुभकामनाएं, बधाई आपके साथ है। और मैं एक जैसे पहले शेयर होल्डर में जो हमारे CS साहब हैं मिस्टर प्रदीप मांझी और इनकी एंटायर टीम की जो तारीफ की है, मैं उस चीज़ पे मोहर लगाता हूँ क्योंकि मैंने देखा है पिछले पूरे डिकेड में कि वो जब भी हमारी फिजिकल मीटिंग होती थी वो एक चीज़ शेयर करते थे एंटायर कम्युनिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स कि जो हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर हैं वो एनुअल रिपोर्ट को गीता की तरह मानते हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं। तो फिर मैं परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग रहे, उनका आशीर्वाद रहे, ताकि आप हमारी कंपनी को आने वाले टाइम में जो अब नए हम वर्टिकल में आ रहे हैं उनमें आपको सफलता मिले और हमारा जो शेयर प्राइस है वो दिन दुनी रात चौगुनी करे। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा सर, जो भी हमारे वर्टिकल आ रहे हैं मैं यही कहना चाहूँगा उनके जो हैं तो जैसे बोनस की बात आई थी या बाईबैक की बात आई थी, उस चीज को मैं साइड करते हुए सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहूँगा जो का जो मार्केट शेयर बढ़ेगा सब जानते हैं सर। हाँ, कुछ हर्डल्स हैं सेमीकंडक्टर की, वो भी सोल्व हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसमें भी सर हमें शेयर दीजिएगा ताकि साल में कम से कम 2 बार आपसे मिलने का मौका मिले। और मैं एक बार फिर एंटायर बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का मौका दिया और आने वाला भविष्य हमारा सुनहरा होगा। मैं इसी आशा के साथ आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। मैं ये बताना चाहूँगा स्पार्क मिंडा की जो ई मोबिलिटी कंपनी है वो आप ही की कंपनी है, वो मिंडा कॉर्पोरेशन की ही एक सब्सिडरी है। धन्यवाद प्रवीण जी। थैंक यू फॉर योर विशेस एंड डेफिनेटली प्रभु का आशीर्वाद तो चाहिए, उसके साथ साथ आप सब लोगों का भी सहयोग और साथ चाहिए। धन्यवाद प्रवीण जी। Thank you, sir. So our next shareholder is Santosh Bhutani. Yeah, Santosh ji, over to you. Anji, can you hear me, sir? Yes, please. Okay. Good morning, everyone. Thanks for giving me opportunity. Chairman, sir, my almost questions has been addressed in your opening remarks and no more query related to balance sheet. Sir, I want to know your comments on few points. Future strategy on the capital improvement and assets quality. Impact on the margin, and second is the impact on the margin range due to inflation, rupee depreciation. And third is with the improved scenario, how do you plan to reward the shareholders and your value creations roadmap for coming year? Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू संतोष जी। जैसे मैंने एक शब्द बोला था अपनी स्पीच में, कैश जनरेशन भी हम कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कैपिटल एलोकेशन। वी कंटिन्यूअसली सी एंड वी आर वेरी केयरफुल टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल
so that we should continuously improve our ROCE. That is a very, very important area for us. Whatever the money we spend, we always calculate the ROC, because the cash is very important and where to spend the money is very important as a company. The impact on the margin, what you said, whether it is from the forex, whether it is from the commodity impact, or whether it is from other cost or other inflation, this, as I mentioned earlier, that we have a back-to-back arrangement with the customer for commodity and forex in most of the cases. So to protect our margin, that secure our protection for the margin. And I also mentioned that we continuously do the VAB activities in our company, so that how we can reduce our cost and improve our margin. This is a very, very important area what you have mentioned. And definitely when we will improve our margin and we will improve our EBITDA on a regular basis, so which will create the value creation for our shareholder, which is the topmost area for us, or topmost priority for us, how to create a value for all of us. Thank you, Santosh ji. Thank you, sir. Sir, our next shareholder is Mr. Mahendra Pal Bhutani. Bhutani sir, over to you. जी, थैंक यू वेरी मच सर। चेयरमैन सर, पिछले 1 घंटे में मैंने देखा, और आपने जो अपनी स्पीच दी उसके बाद श्री विनोद रहेजा जी ने जिस तरह से आगे का पूरी डिटेल में हमें कंपनी की हर चीज को बताया, और बहुत अच्छा लगा। वैसे तो चेयरमैन सर, पिछले 3 साल के अंदर अगर हम गौर करें कंपनी की वर्किंग को, कंपनी की परफॉर्मेंस को, और 3 साल के जो देश के अंदर महामारी और जिसके कारण बहुत अनिश्चितता, चुनौतियां, विपरीत स्थितियां, अगर उसमें भी अशोक जी आपने अवसर को ढूंढा और उस अपॉर्चुनिटी के रूप में आपने कंपनी को जो गति दी है, वाकई मैं उसकी दिल से तारीफ करता हूं। आपने अपनी अध्यक्षता में अपनी मैनेजमेंट पूरी टीम को लेकर कंपनी के जो मापदंड हासिल किए हैं, जो आपने कंपनी के जो हम परफॉर्मेंस देखते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, बहुत बेहतरीन पोजीशन पे आप कंपनी को लाए हैं। और मैं ये समझता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, क्योंकि हमारे अशोक जी, हमारी मैनेजमेंट टीम जो सोचती है और उसको हासिल करने में मुझे लगता है पूरा जो बेस्ट है वो आगे कंपनी की परफॉर्मेंस में हमें नजर आता है। मुश्किलें देखी हैं कि अब मैं ये कहूंगा कि तूफानों से कह दो कि वो थम जाएं। ये महामारी, ये जो हम चिप की देख रहे हैं, कोई और परेशानियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक टीवी की देख रहे हैं हम, तूफानों से कह दो कि वो थम जाएं, क्योंकि स्पार्क मिंडा पंखों से नहीं बुलंद इरादों से उड़ान भरती है। ये उड़ान कंपनी को और ऊंचाई पर लेके जाएगी और एक नई पहचान बनाएगी, ऐसा हमें नजर आ रहा है भविष्य में। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर कई कंपनियां आई, बड़े बड़े प्रीमियम लेके आई, और पेटीएम जैसे कई इशू आए, उनका हाल जो है हमने सबने देखा। कहते हैं प्रोजेक्शन दिखाने से कुछ नहीं होता, कद बड़ा नहीं होता एड़ी उठाने से। बहुत सारी प्रोजेक्शन दिखा देते हैं, अभी बड़ी कंपनी बन गई, पेटीएम आ गया इशू, लोग पागल हो गए, एलआईसी के पीछे पागल हो गए सर। और एलआईसी की हालत देखिए क्या है, गवर्नमेंट की इतनी बड़ी कंपनी क्या हालत है। कद बड़ा नहीं होता सिर्फ एड़ी उठाने से, आसमान भी झुक जाते हैं बुलंद इरादे वालों से। और बुलंद इरादे रखने वाले हमारे अशोक जी जो हैं, हमें बड़ा गर्व है और बड़ी खुशी है। मुझे मौका लेट मिला, मेरी दूसरी मीटिंग शुरू हो चुकी है। ध्यान दे रहा हूं इस बात की
मगर मैं सर आपसे जुड़ा हूं, मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है सर कि हमारी कंपनी ने किस तरह से अपने आप को कंपनी की दिशा को और किस तरह नई दिशा दी है। सर हाल ही में देश के प्रधानमंत्री की जो सोच थी, जो उसको लेकर माननीय पुरुषोत्तम रूपाली जी ने एक नई कंपनी बनाई कि जो NDDB की एक नई कंपनी का शुरुआत की है, जिसमें 32 करोड़ गाय के मल मूत्र से इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, बायो बायो क्या क्या चीजें बनाने जा रहे हैं। देश में एक नया प्रयोग होने जा रहा है। भारत जो है विश्व को एक नया इस क्षेत्र में जो परेशानियां हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की, और भी उसको एक नई दिशा देगा। भारत और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक नया बूम, नया आयाम ये देश मुझे लगता है देने जा रहा है। और आपकी दूरदर्शिता और आपकी भावी कदम कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मान जी को, जो सबके हर शेयरहोल्डर को पूरा मान और सम्मान, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, चाहे कभी भी फोन करो, हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं। यही एक ब्रिज है मैनेजमेंट के बीच और हमारे जो जिसको निर्माण कर रहे हैं श्री माननीय हमारे प्रदीप मान जी, उनकी टीम, ममता जी, बिल्कुल पूरी टीम इतनी अपने काम में जो है परफेक्ट है कि हमें लगता नहीं हम क्या इनको शिकायत करें। आज हमें मीटिंग में सोच रहे थे हम कुछ ना कुछ बोले, वीरेंद्र जी कुछ ना कुछ ऐसा बोले जी। हमें कोई बैलेंस शीट में सर कोई पॉइंट नहीं मिला, हम क्या बोले। बैलेंस शीट परफेक्ट वे में, कंपनी बहुत अच्छे से, कंपनी की प्रोग्रेस देखो, 3 साल में शेयर कहां से कहां पहुंच गया। मैं सोचा था कुछ पॉइंट बोलूं, ऐसा कुछ शिकायत करूं आपसे, मगर मुझे कुछ शिकायत करने का मौका नहीं मिला। मगर मैं क्योंकि हमारी कंपनी एक परफेक्ट दिशा में काम कर रही है। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे बोर्ड को और पूरी टीम को, हर एम्प्लॉय को जिन्होंने गत वर्ष में कंपनी के लक्ष्य को हासिल करने में अपना बेस्ट दिया, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं। ये देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, मगर सर ये सारे जो अमृत महोत्सव है ये फिजिकल फॉर्म में हो रहा है। मगर मैं सोचता हूं कि काश ये अभी आने वाले वक्त में हम हूबहू आपसे मिल सकें और आपको एक नए आनंद की अनुभूति भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत सलाम, शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू। Sir, our last shareholder is Kirti Gupta. Yeah, Kirti ji, over to you. Yeah, thank you, Pradeep sir. I would like to say, like, I'm very blessed to attend this meeting. This is my first AGM I'm attending of any company, and the presence of all the chairmen and all other board of directors is great. And so I just have one question. Like most of the queries are answered, and I just have one question, Mr. Ashok Minda, when you were answering a fellow shareholder about that. We have stopped using plastic, like after the government has banned it completely. So don't you think like we should keep these things from the very beginning, and we should consider the effects of our product and the packaging of our products from the very beginning, and take the initiative rather than following the steps of government or following the steps of the government. So Kirti ji, first of all, thank you very much for joining the AGM. कई चीज ऐसी होती है जो संस्कार से आती है। गवर्नमेंट तो बहुत बाद में नियम बनाती है। गवर्नमेंट ने जैसे CSR का नियम बनाया 2% प्रॉफिट का, ये कोई पिछले 5-7-10 साल में बनाया। लेकिन हमारे पूज्य पिताजी ने 30 साल पहले जो CSR की एक्टिविटी थी वो चालू कर दी थी, चाहे वो कम्युनिटी के लिए, चाहे वो डिसेबल कम्युनिटी के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए, चाहे वो लाइवली चाइल्डहुड के लिए। ऑल दिस वी हैव स्टार्टेड अबाउट 25-30 years ago.
Similarly, in the plastic or maybe in asbestos, this asbestos sheets and asbestos, using of asbestos, lead, that we have stopped maybe 20 years back or 15, 20 years back. Somewhere the government introduced their policies very, very later on. So we never wait the government legislation or government law and then react it. Your company is always proactive for such type of initiative, and we don't wait the government. We wait what is good for community. We always be very creative what is good for community and act upon whether the government legislation is there or not. And that is what is we feel that it is our responsibility as a corporate citizen. Thank you, sir. Sir, all the queries raised by the shareholders through chat box shall be suitably replied through email within a week time, sir. Sir, now I request Vinod Reja ji, our group CFO, to present a vote of thanks to the chairman, sir, and to the dignitaries. Sir, over to you, Vinod ji. Thank you, Pradeep. On behalf of the entire management team of Minda Corporation Limited, I would like to express my gratitude to all our esteemed shareholders for gracing this event of 37th AGM by joining through virtual mode. It shows your confidence in the company and its management. The management of Minda Corporation would also like to thank our board of directors for their vision, untiring attention, continuous guidance, and foresight. I would also like to thank Mr. Vikas Mehra from SR Botley Boy and Company LLP, statutory auditors of the company, and Mr. Ranjit Pandey, practicing company secretary from Ranjit Pandey and Associates, scrutinizer for the meeting, for gracing the event, and really appreciate their effort and sincerity towards Minda Corporation and its management. Last but not the least, I, on behalf of the entire management team of Minda Corporation, would like to assure our shareholders that management focus will continue to be on sustainability, growth, and governance, with, of course, right capital allocation to generate consistent and superior performance. Again, thank you everyone for being present virtually. Thank you very much. With this, the event of 37th AGM is formally concluded. E-voting will continue for next 15 minutes for the shareholders. Thank you very much. Stay happy and stay safe. Thank you. Back to you, Pradeep. Thank you, sir. The meeting is now concluded, sir. Thanks a lot. Have a good day, sir. Thank you, Ji. Thank you. Namaste.